So hey guys, what's going on? So I was just hovering around the web and I got to know about this new tool few days back. So I just thought that I should also share with you tool guys. So this tool is called the Windsurf. Okay. So what is so much cool about this? This tool has an inbuilt AI editor. You can just utilize the AI power for your coding. So let me open it for you. You can just go ahead and on this website Codeium.com and you can just explore the Windsurf. So let me open the Windsurf and then we can see कि हम ये इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ना अपने यूज केसेस में. तो देखो ये इंस्टॉल करना का प्रोसीजर काफी इजी है. आप सिंपली जाके इंस्टॉल कर सकते हो. लाइक यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर. यू कैन क्लिक द डाउनलोड बटन फ्रॉम हियर and you can just follow this. Okay, just paste the thing. Like I'm in the Linux, so I will just do here. I can just paste this thing. Okay, अब मैं enter करूँगा root password and then yes, and it will just configure a lot of things in the back, and you can just go ahead and type here apt-get update, and it will update the repo in the source file. And when you go ahead and type this, तो Windsurf डाउनलोड हो जाएगा. ओके, मेरे में डाउनलोडेड है तो मेरे में डाउनलोड होने की जरूरत ही नहीं है. इसको आप इसे सेटअप कर लेना. इट्स टू मच इजी, जस्ट लाइक अ VS कोड that I hope that you guys are using that thing. ओके, तो ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन देगा. जैसे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ तो आपको मैं क्लियरली बता पाऊंगा कैसे क्या सीन है. तो आई विल सजेस्ट यू गाइस, सबसे पहले तो आप इसकी वेबसाइट पे जाना है ना और इसको रजिस्टर कर लेना. मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा. तो आप लॉगिन विद गूगल कर लेना. आप गूगल से लॉगिन कर लो. तो लॉगिन करने के बाद लेट मी लॉगिन एंड देन आई विल शो यू. ओके, so let me log in and then I will show you guys how we can do that. Or you can also use some hooks for using this thing. Also it has a limited token that you will get credited in your account, but you can also find some loopholes, and I hope you know what those loopholes are. Temporary mail and all. Okay, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो लॉगिन विद गूगल, and then you can just register with any of my let me put the password, and then we can go ahead and try this tool for a little bit. What is happening? Continue. So yeah, now this is logged in, and skip. Okay, and then I will go ahead, and if I go here Windsurf login, so it will just, I know guys, I trust you. You can set this up in your system. Okay, this will just definitely go on the website and verify the token, verify the login authentication OAuth, and it will log in into your system. Okay, Surf of Arush Sharma. Okay, so this has been set up. Yeah, so now I can use it. So there are some shortcuts that I could use for coding. Like let me create a folder here, and then I will be able to explain you better. Okay guys, so let me just import a folder. In which folder? Just make a folder here. Windsurf example. Yeah, let's import this. फोटोज है भाई. हाँ, या तो हो गया. तो यहाँ पे मैं सिंपल एक छोटा सा एप्लीकेशन क्या बनाऊं, छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं. ठीक है, जस्ट सिंपल HTML प्रोग्राम. This can help you in a lot of way. This can also distract you, so don't use too much. I'm just sharing this with you so that it can increase your productivity.
do not use this for decreasing that. Okay, तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे से कोड लिखवाता हूँ, ठीक है, जैसे कि write me a simple portfolio website with animations and my name on it, Arush Sharma, with some dummy links to my projects. Take some fake projects name as well. Okay, and then write me simple portfolio website and in HTML, CSS and JS. Let's see if it will. Yeah, it's working. And this, guys, I'm using the free model. Okay, you can also just go over here and click, and you can also switch. There are many models here. Why it is only showing me 2? Let's just try this simple model, and then we will switch to the another model and try. Actually, these models are more these are in premium options. This cascade base has no credits, so you can utilize this as much as you want. This cannot edit in your code, not very much. It can edit. You can just go edit in the right section. It can write. Write mode is not available when using the base model. Okay, guys, let me just take if I upgraded. Yeah, so my application has been upgraded. So let me restart this. It will be start upgraded, I think, in upgraded model. Yeah, so let me Windsurf. Yeah, okay, so this is now updated, and then I will switch the model. Okay, I don't know what you guys start with the free version. You will get a premium version for a newer account. Actually, I have been using this for a few days, so my credit has been spent on it. So so I am now getting all the okay. What is happening? Let me check this. No credits upgrade to be a plan. So guys, let me log in with another account, another new account. Okay. Guys, sign out. Let me change my default browser. Actually, मेरा जो new login है Brave, and now if I do this login with Codeium, see guys, these are the things that are some technical. Don't confuse with it. Just focus on the task. Open XDG. Open. अब मेरा नया अकाउंट आई थिंक लॉगिन होना चाहिए. या सर्फ अब यू हैव 14 days रिमेनिंग इन विंडसर. तो अब मैं मॉडल कोई भी यूज कर सकता हूँ. देखा यहाँ पे सारे डीपसीक एंड ऑल. यहाँ पे आप जब न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब मैं इसे बोलता हूँ राइट मी अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट विद HTML, CSS, JS, JavaScript. Okay, use fake projects link, also have nice CSS with some animations, and my name on the what is it called in the front end, the first this let me write name on the home screen, Arush Sharma, and let's see कि क्या करता है. और ये गाइस सारे फाइल्स वगैरह जो है ना खुद से क्रिएट भी कर लेता है. ओके,
मैं खुद ही I will wait for few time and just bring a video with you to you guys. इसमें यूज करके हम लोग सिंपल थोड़े से एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं. तो आप ये मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे ना राइट वाले पे करना. चैट पे करोगे तो ये राइट नहीं कर पाएगा, ना ही ये फाइल क्रिएट कर पाएगा. ओके, तो देखो ये बोल रहा है क्रिएटिंग स्टाइल्स, तो फाइल क्रिएट कर रहा है. स्टाइलिंग वाली फाइल लिखेगा और एट लास्ट you will be able to see those files. Yeah, so here you can see the style.css has been created and scape.js as well, and you can just prompt engineer it more. Just accept all of this. Yeah, script ये लिख देगा HTML वाला क्यों नहीं अप्लाई हुआ? लेट्स प्रीव्यू है तो आई थिंक मैंने पहले क्रिएट कर लिया था ना, तो इसलिए इसको डिलीट करते हैं. इसे दोबारा बोलता हूँ मैं. यू हैविंग क्रिएटेड index.html. I apologize for the confusion earlier. You are right. मैंने डिलीट कर दिया और मैंने बोला कि तुमने नहीं बनाया. So now it has been created for me. Now let's run this. Okay, this seems good to me, and then I will just go ahead and what was that for live? I think I didn't have set up this live server. Yeah, live server install. तो ये इंस्टॉल हो गया, and then now I can go live. Okay, go live. Windsurf example. Yeah guys, you can see. तो देखा कितना कूल है. Let me reload this. तो ये एक सिंपल सा पोर्टफोलियो यार ऑसम है. मतलब आप देख सकते हो इसने तो काफी हेडर बनाया मेरे लिए. लेट मी जूम, काफी होता रीसेट करने दो मेरे को. ये देखो फ्रंट स्क्रीन यार, दिस इज सो मच गुड यार. Yeah, this is, even I didn't have this kind of expectation for it. Let's make this more colorful. Let's prompt it. I think in future there will be, make it more colorful. You guys, if you are a junior developer, you can use this to increase your productivity, but don't use this so much so that it will eat your productiveness. Okay, just use this on the thing that takes you time, but you know what you are doing. Okay, ऐसा नहीं कि आप गए आप पूरी वेबसाइट बना लो इससे. You will need that technicalities in your brain to understand this. नहीं तो ये कुछ भी एडिट कर देगा और यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ऑल्दो इट कैन इम्प्रूव, ये बहुत इम्प्रूव होगा फ्यूचर में. एंड इफ यू गो इन द स्टाइल्स, व्हाट द चेंजेस इट पुट इनटू दैट, यू कैन जस्ट कंपेयर इट. ओके, सो यू कैन जस्ट कंपेयर दिस थिंग व्हाट इट हैज चेंज्ड, एंड इफ यू कुड एक्सेप्ट अ पोर्शन ऑफ इट, लाइक आई कैन एक्सेप्ट हियर एंड I have to do everywhere else also. Why not just accept everything at once? तो मैंने ये किया और ये चेंजेस कर दिया. नहीं तो यहाँ से एक्सेप्ट करोगे सारी चीजें हो जाएगी. अब देखो, वाओ यार, see guys, look at this यार. I wanted to, ये देखो यार, ये कलर चेंज भी हो रहा है. This is awesome. View project,
although it doesn't have anything. You can also use some cool technical images. Let's see what it do. यार ये तो बहुत अच्छा निकला। देखा गाइस, तो आप इससे बहुत सारी चीजें करा सकते हो एंड यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर ऑफ एनी लैंग्वेज। इसे ये मत समझो कि रिप्लेस करेगा या कुछ करेगा, ये हाइप बन रखा है। इट विल नॉट रिप्लेस, ऑल्दो इट विल रिप्लेस जूनियर पोजीशन, क्योंकि जूनियर लोग जो काम करते हैं वो तो यही करके देने वाला है ना। तो मेरी वीडियो का इतना ही मतलब था कि बस मैं आपको ये टूल इंट्रोड्यूस करा दूं कि आप यूज, क्योंकि मेजरली आई डोंट नो how many of you are using this tool, so I just thought that you should share. I mean, I was using this for few weeks and it is faster. And you know guys, if your token elapsed, what you can do to create a new account, you know, you're smart. तो आप सभी समझदार हो। Just click here, just accept all of changes, okay? So it will actually, it can change a lot in your lot of file. And this is very important, okay? And I will bring a video on it for more advanced use cases, okay? Although these images are not coming here, इसने कहाँ से लिया? No image present. Actually image ही ले रहा है, but let's fix this. I want you to put real images that is publicly available and visible. These images that you just use aren't loading. ये सारा कुछ खुद से करेगा, मतलब कुछ अगर कोड में कोई फिक्स है ये सब रीड करेगा, वो एडिट करके देखो ना कैसे कैसे करेगा। देखो पिक्सावे सब ले लिया, पिक्सावे टेक्स्ट टैग आइकन यूजिंग लेवी कौन सीडियन। देखो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, कहाँ से ले रहा है यार। इट्स कूल, एक्सेप्ट ऑल दो चेंजेस एंड बस। या गाइस सी, लुक एट दिस यार, आपको क्या चाहिए, इतना एडवांस हो गया चीज, ये देखो ना। एंड या यू कैन जस्ट मॉडिफाई इट। आई मीन फ्यू थिंग्स आर नॉट वर्किंग बट यू कैन डू दिस चेंजेस, लाइक यू कैन जस्ट गो हियर एंड यूज योर इमेजेस एंड मेक इट मोर ऑसम। एंड यार देखो तो ये कितना सही है, मतलब इसने तो पूरा चेंज कर दिया यार। ये देखो होवर डिस्टेंस सारा एनिमेशन कूल, बाउंसिंग इफेक्ट, ये देखो यार हाउ कूल इट इज, isn't it? So this is a simple video. I just want to introduce this tool to you. So in future, in few days actually, I will bring the more advanced video where I will create an advanced project with this, so that you will have a better idea about it. So let's wrap up this video and see you soon. Bye bye guys. If you like this video, so don't forget to hit the like button actually, okay? And subscribe my channel if you can do so. Thank you guys. Meet you soon in the next video.